Today we will discuss the structure of interrogative sentence in present indefinite tense. We have drawn some tables over here for your convenience so that you may easily understand that. As I have told you that in interrogative sentence we will use the helping verb at the beginning of the sentence. The helping verb will be preceded by subject and verb, and after that the object, and at last we will use the sign of interrogation or interrogative sign. If our subject, now pay attention to this detail, if our subject is first person pronoun, that is I or we will use the helping verb do at the beginning of the interrogative sentence. Similarly, if our subject is second person pronoun, that is you, or third person pronoun they, or some plural nouns, then we will use the helping verb do at the beginning of the sentence. And if our subject is he, she, it, or some singular noun or third persons, then we will use the helping verb does over here. Now look at the structure. Do I write a letter? Remember that in any interrogative sentence in present indefinite tense, we will never add any s or es to the main verb or present form of verb. Similarly, do you write a letter? क्या आप एक खत लिखते हैं? Do they write a letter? क्या वो एक खत लिखते हैं? Do Ali and Akram or Aslam or do the class write a letter? Similarly, if our subject is he, she, it or a singular noun, then we will use the helping verb does over here. Does he write a letter? Does she write a letter? Does Ali write a letter? Now let's proceed to the another structure of present indefinite tense, which is of the negative interrogative sentence. In negative interrogative sentence, we will use the helping verb at the beginning. After that, we will use the subject of the sentence. After that, we will use the sign of negation or negative sign, and negative sign will be preceded by verb, main verb, and at last we will use the object and the sign of interrogative over here. Now pay attention to the structure of negative interrogative sentence in present indefinite tense. उर्दू में अगर हम इन्हें कहें तो ये मनफी सवालिया जुमले बनते हैं. In negative interrogative sentence, we will use the helping verb do or does at the beginning of the sentence. Helping verb will be preceded by the subject. After that, we will use the sign of negation or negative sign, which is almost not. After that, verb will be used in present form, and at the end, the object, and at last we will put an interrogative sign over here. Now pay attention to this structure. Do I not write a letter? क्या मैं एक खत नहीं लिखता? Do we not write a letter? क्या हम एक खत नहीं लिखते? Do you not write a letter? क्या आप एक खत नहीं लिखते? Do they not write a letter? क्या वो एक खत नहीं लिखते? And similarly, likewise, if our subject is he, she, it or some singular noun, then we will use the helping verb does at the beginning of the sentence. Does he not write a letter? क्या वो एक खत नहीं लिखता? Does she not write a letter? क्या वो एक खत नहीं लिखती? Does Ali not write a letter? क्या अली एक खत नहीं लिखता? These are the basic structures of an affirmative sentence. Means how we can mold an affirmative sentence into 4 different types. First, we taught about an affirmative sentence. After that, we learned about negative sentence. After that, we learned about interrogative sentence. And at the last, we knew about the structure of negative interrogative sentence in present indefinite tense. उर्दू में अगर समझना चाहें, किसी को समझ ना आई हो, तो हमने 4 स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए एक सादा से आम मुस्बत जुमले के, जिसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसे हम मुस्बत या सादा जुमला कहते हैं. उसके बाद हमने नेगेटिव यानी मनफी जुमला बनाया कि आई डू नॉट लाइक दिस और आई डू नॉट राइट अ लेटर वगैरह वगैरह. आफ्टर दैट उसके बाद हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा टेबल की मदद से कि कैसे हम हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल को स्टार्ट में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है,
उसके बाद मेन वर्ब लगती है और आखिर में कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट लगता है, जैसा कि इस टेबल से आपको बखूबी अंदाजा हुआ होगा। उसके बाद हमने मनफी सवालिया जुमले की स्ट्रक्चर को भी समझा कि कैसे हम एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव या मनफी सवालिया जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रहते हुए बना सकते हैं। उसमें हमने पहले हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट या फाइल यूज़ किया, उसके बाद हमने नॉट का साइन या नॉट की का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नहीं का या नफ़ी का एक लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने मेन वर्ब यूज़ किया जो कि प्रेजेंट फॉर्म में होता है नॉर्मली, और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट लिखा। याद रखिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवालिया और मनफी सवालिया जुमले के आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान जो है वो डालना मत भूलिए।